Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is in English for grade 2, and we are learning unit number 5, and its title is Hashir's Honesty. Yes, my dear fellow teacher, this lesson plan, PowerPoint presentation and worksheet links are given below. You may click it, download it, or you can adjust it for your ease. I am going to deliver my lecture according to this lesson plan. And I have divided all this chapter according to these lectures, my dear teachers. So now I'll inform you that how we will cover up this unit. In our lecture number 1, we will learn about, see there, my dear students, under the title of grammar, we will learn about describing words on page number 41 and 42. And its SLO will be identify and match some pairs of describing words showing quality, size and color. In our next lecture, in lecture number 2, my dear students, so we have to learn under the title of grammar about question words on page number 43. And my dear teachers and my dear students, and its SLO will be use questioning words what, who, where, when, why. So we will learn about question words. In our next lecture, lecture number 3, what we have to do? Yes, we have to learn about how we have to request and command on page number 43 and 44. We will learn about our speaking skills. We will develop in oral communication skills, and its SLO will be, my dear students, use and respond to simple sentences showing request and command both physically and in speech. That how we have to request, if we are going to request to someone, so how, in which word we will request. And if we have to give command, if someone is giving command, so how we will follow it. In this lecture, we will get about it. In our next lecture, what we have to do? See there. Yes, we will learn about language focus in reading and writing, how we can syllabify words into 2-3 syllable words and consonant clusters on page number 41. And its SLO will be, my dear students and my dear teachers, write simple 2-3 words with correct spellings, leave space between words, and next SLO will be identify and pronounce with reasonable accuracy common consonant clusters in initial positions. So in this way, we will cover up our 2 SLOs in this chapter. In next lesson, our next lecture will be lecture number 5. We will learn about read and understand through the text. How we will understand text through our paragraphs on page number 38, 39 and 40. And its SLO will be, my dear students and my dear teachers, read aloud words and simple sentences with a reasonable level of accuracy in pronunciation. We will learn about, if we are going to read a text, how we will read it. In our next lecture, in lecture number 6, what we have to do? We have to read and understand the text, and we have to find comprehension questions about the text. And its SLO will be read aloud words and simple sentences with a reasonable level of accuracy in a pronunciation. In our lecture number 7, what we have to do, my dear students, let's see. Yes, we will learn about time, how we have to tell time, if we are going to tell time by a clock, so how we will tell. So then we will cover up this page, page number 44, and its SLO will be locate specific simple information in a clock by looking at the position of hands of the clock. In our next lecture, and it will be our last lecture, my dear students, of this unit, lecture number 8, we will learn about writing skills on page number 45, and its SLO will be
Write a few sentences to describe a picture and a series of pictures. So we will describe how we can describe pictures through different ways. Okay, we will learn about picture description in our lecture number 8, and this will be our last lecture of this unit. Okay, my dear students, so now we are going to start our work. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Al-Quran, Surah As-Saba, verse number 26, say, our Lord will gather us together, then he will judge between us with the truth, for he is the all-knowing judge. Subhanallah, my dear students, this beautiful verse is telling us about the importance of truth in front of Almighty Allah, that how Allah Almighty likes, loves truthful persons. So if we are in which situation, in any situation, so my dear students and my dear teachers, we have to speak truth, because it will give us an honor in front of Almighty Allah. So this beautiful verse is telling us about truth. So I hope you have guessed that what we are going to learn today. Yes, let's see. Open page number 38, my dear students. We are going to start our unit number 5, Hashir's honesty. So my dear students, आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाशिर्स ऑनेस्टी, हाशिर की ईमानदारी. देखते हैं कि हाशिर ने कैसे ईमानदारी दिखाई. ओके, और आपने केयरफुल होके सुनना है. Start on page number 39. Open. Yes, I'm going to start, my dear students, so be ready. Once there was a boy named Hashir. एक दफ़ा एक लड़का था जिसका नाम क्या था? हाशिर. On his way home, अपने घर जाते हुए, from school से he found a purse on the footpath. उसने अपने रास्ते पर उसे क्या मिला? उसे एक पर्स मिला. He picked up, उसने उस पर्स को उठाया. He unzipped it, उसे खोला. Unzipped mean खोलना, पर्स को खोलना. He saw that there was a necklace. उसने देखा कि उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक हार था. There were some keys and money. उसमें कुछ चाबियां भी थीं और रकम भी थी. He stopped, वो रुका, and looked around to check if anyone was there. वो रुका और उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि अगर वहाँ कोई मौजूद है तो वो उसे देख ले कि ये पर्स किसका है. Okay? He did not see anybody, but वहाँ तो कोई था ही नहीं. He did not decide what to do with the purse. वो फैसला ही नहीं कर पा रहा था, my dear students, प्यारे बच्चों, के पर्स का क्या करे. मीन्स जब उसे पर्स मिला तो रास्ते में उसने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की कि कोई है तो वो उससे पूछ ले, मे बी ये उसका हो, गलती से किसी का गिर गया हो, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं और अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं करूँ क्या. सो नेक्स्ट लेट्स सी आगे क्या हुआ. ही रीच्ड होम एंड गेव दैट पर्स टू हिज फादर. वो घर चला गया, पर्स लेके घर चला गया और वो पर्स उसे किससे दे दिया? उसने अपने बाबा को दे दिया, अपने अब्बू को दे दिया. ही टोल्ड हिज फादर दैट ही फाउंड दिस ऑन हिज वे. उसने अपने अब्बू को बताया कि उसे ये पर्स कहाँ मिला? रास्ते में मिला. ओके. ही प्रेज्ड हाशिर फॉर हिज ऑनेस्टी. तो उसके बाबा ने क्या किया? उसकी हाशिर की ईमानदारी पे उसकी तारीफ की. ओके, उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया क्योंकि उसने सच बताया और वो पर्स खुद रखने की बजाय अपने बाबा को दिया. Hashir's parents were very delighted that their son was an honest person. तो हाशिर के वालिदैन को क्या था? बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा बच्चा ईमानदार है. मीन्स वहाँ तो कोई नहीं देख रहा था ना, ऐसा है ना बेटा, कोई देख तो नहीं रहा था. अगर उसे पर्स मिला था तो वो उसे रख लेता, उसमें से पैसे यूज़ कर लेता या जो भी करता, छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. पहले उसने कोशिश की कि कोई वहाँ मौजूद हो, उसे वो पर्स दे दे, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं था तो वो पर्स उठा के उसने अपने बाबा को दे दिया, घर लेके गया. और उसके वालिदैन इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा एक ईमानदार और सच्चा बच्चा है. वेरी गुड. सो हाशिर्स फादर हैंडेड ओवर दैट पर्स टू द पुलिसमैन ऑफ हिज एरिया. और हाशिर के वालिद ने क्या किया? वो पर्स उठा के उस एरिया के पुलिसमैन को दे दिया, पुलिस स्टेशन में दे दिया कि जिसका भी है, जाहिर है उसने वहाँ पुलिस स्टेशन में कोई ना कोई कंप्लेन तो की होगी, तो वो आके ले जाएं. तो बेटा इस चैप्टर से आपको क्या सबक मिला है? हाँ जी, इससे हमें ये सबक मिलता है तो हमने हर हाल में सच बोलना है. सपोज हमें इवन आपकी क्लास में भी बेटा, क्लास में आपके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, किसी का रेज़र है, पेंसिल है, शार्पनर है, अगर वो आपकी नहीं है, आपको मिल गई है, स्कूल में मिल गई है, तो वो आप अपने टीचर को दें
या अपने प्रिंसिपल को सबमिट करवाएं. ओके, पहले अपने टीचर को दें, अपने स्कूल से क्लास से पूछें, अगर वो किसी का नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा कि ये हमारी चीज़ है, तो वो आप अपने टीचर को दें और अपने प्रिंसिपल को जमा करवाएं. उसे अपने पास नहीं रखनी है, और यही इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई होती है. ओके, तो इट मीन्स इस लेसन से हमें यही सबक मिल रहा है कि हमने हर हाल में सच बोलना है. ओके, क्योंकि अगर हमें और कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला हमें देख रहा है हर हाल में, और अल्लाह ताला को भी हमेशा कौन से लोग पसंद हैं? सच्चे लोग पसंद हैं. सो हैव यू गॉट इट? गुड. दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. ओके, आज हमने अपना ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है माय डियर स्टूडेंट्स. सो टुमारो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट lecture number 1. Okay, so till that time, stay blessed. Thank you so much. Always speak truth, and Allah Hafiz.